हाय वेलकम बैक टू माय चैनल. आई एम बैक लिटरली आफ्टर पोस्टिंग वीडियो कि आज की बात तो मैं कभी गायब नहीं होने वाली, मैं गायब हो गई थी. एंड ऑल्सो दिस इज माय फर्स्ट वीडियो ऑफ 2026. आई नो एंड आई एम लेट सो बट हैप्पी न्यू ईयर. If you follow me on social media like Instagram and Snapchat, you know I was traveling. ठीक है, I was traveling. I was trying to post my first video January में, but I was traveling. I was traveling to Pune, and उसके बाद आके my mom got so sick, and उसके बाद I got so sick. I'm still so sick, but I'm little better. But yeah, that was my summary for January. So I tried. मैंने कोशिश की थी बनाने की, but I was genuinely very, 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 very sick. Sick to a point कि मुझे पता भी नहीं चला 3-4 दिन कहाँ चले गए. I was that sick. But I'm okay now, so yeah, I'm fine. And I hope आप सबका 2026 अच्छा शुरू हुआ हो. You guys were not sick like how I was. Okay, whatever. So, जैसे हर नया साल शुरू होता है, everybody has this कि हम नए साल में ये करेंगे, नए साल में वो करेंगे. I also have 2 major goals with obviously छोटे-छोटे side goals, but like 2 major goals for me. If you're following me on Instagram, sorry, not Instagram, but if you're following me on YouTube, you know there is one thing I'm crying about. कब से? That is मैं grow नहीं कर पा रही हूँ. I'm not saying physically. That I'm growing. That I am growing. That I'm growing. I mean my presence. I'm still stuck on 7,000. My YouTube is still stuck on 600. I have no idea. Like YouTube, I take guarantee कि मेरी गलती थी, but I have no idea what's happening on Instagram. But I refuse to enter 2027 अपना Instagram grow करने से पहले. I will do whatever it takes कि मैं अपना Instagram grow कर सकूं. I will be in a million. I don't know how. We will figure it out. But that is my goal for 2026. Like obviously one of the goals. I have no idea, okay? Where am I going wrong? So I have decided to post whatever I want to post. If you follow me on Instagram, you know I'll be posting a little bit of different videos too. Comedy I will post, पर उसके अलावा मेरे जो मन में आएगा मैं पोस्ट करूंगी. मेरा जो मन में आएगा मैं उसको डालूंगी, क्योंकि वैसे भी जो मैं डाल रही हूँ वो इतना चल नहीं रहा है, तो why not? So if you don't like me, unfollow me right now because you want to see a lot of me. बिकॉज मैंने ये सोच लिया है कि मैं अपनी प्रेजेंस इंस्टाग्राम पे बढ़ा के रहूंगी. मेरे को नहीं पता हम 2027 खत्म करेंगे विद 1 million फॉलोअर्स. आई डोंट नो हाउ बट वी विल. ओके, वी विल. आई डोंट नो हाउ बट वी विल, बिकॉज आई रिफ्यूज टू स्टे ऑन 7,000. 26 में बहुत हो गया है. मैं पिछले 2 साल से 7,000 में फंसी हुई हूँ. अब नहीं, अब नहीं. I have no idea. So if you have any idea or any advice that you want to give me, you can give me. But I'm only taking constructive advice. खबरदार बेइज्जती करी तो, ठीक है? वो मैं अपनी खुद की बेइज्जती कर लेती हूँ, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है. But that's the goal for 2026. Number one. That's the number one goal that I have to follow. And just like that, we are on goal number 2. If you're following me on Instagram and even on YouTube Shorts, you know I've been posting a lot of I have gained weight. That is true. मैं मोटी हो चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा मोटी हो चुकी हूँ. मेरे भाई की शादी थी लास्ट ईयर अक्टूबर में, and I lost a lot of weight because of marriage. मेरे को सबने देखना था. But after that जो weight मैंने gain किया my weight is 68. I will not mention 0.5 because 68 अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है. पर 68.5 कंसिस्टेंसी से बढ़ता जा रहा है. And I don't want that. My birthday is in April. I refuse to grow old looking this fat. It's not bad, okay? It's not bad. I have someone who's been skinny. Reference photo, okay? I have someone who's been very fat. Reference photo. एक टाइम था जब मेरा वेट होता था, जब मैं छोटी थी बहुत सारा स्कूल में, मेरा वेट अराउंड 40 होता था, 40-45. दैट वाज द मैक्स वेट आई वाज गेटिंग. वो बच्चे नहीं होते जिनको लोग डराते, मतलब जिनका मजाक उड़ाते हैं कि इनके बैग में पत्थर डाल दो वरना उड़ जाएंगे. दैट किड आई वाज टू अ पॉइंट. एक टाइम ऐसा भी था मेरा वेट 90 प्लस था. मैंने वेट देखना बंद कर दिया था, मैं इतनी मोटी थी. आई बिकेम दैट किड जिसको लोग बोलते हैं ना, जिनको देख के बच्चों को ऐसे लोग डरते कि खाना छिपा लो खा जाएगी. मैं वो भी थी. एंड नाउ आई एम दिस. आई हैव बीन स्किनी, आई हैव बीन फैट. This is one thing that I've learned. People will judge you no matter what. You lose weight if you want to lose weight. I was skinny. I didn't care about anybody. I was fat. I didn't care about anybody. I am like this. I don't care about anybody. But at this point of time, I feel like I should lose weight because I will look more hot. I want to lose weight. That is why I'm losing. I don't care about anybody. That is one thing I feel like everyone should know. Just because some random person out there is telling you to lose weight, you don't need to lose weight. Trust me, I've been making videos for a while now, and people say
People say whatever they want to say, so don't lose weight because some random person out there is telling you to lose weight. If you feel good in that body, stay in that body. I feel like I should lose weight. I should lose weight, and the goal is to lose 10 kg. I'm in 68. My goal is to be in 50s. 58. I think 58 will be good. If I can lose more, I won't mind. But like 26 खत्म होने तक 10 किलो कम करना है हमें, हम करके रहेंगे. बिकॉज वन थिंग यू डोंट नो अबाउट मी, आई एम वेरी ढीठ. अगर मैंने कोई चीज सोच लिया तो हम करके रहेंगे. आई वॉन्ट टू नो हाउ आई लुक व्हेन आई एम स्किनी. पेट अंदर ऐसे, आई वॉन्ट टू नो दैट. एंड इसकी शुरुआत अभी से होगी बिकॉज मेरा बर्थडे अप्रैल में है एंड आई विश आई कुड जस्ट लूज लिटिल वेट तब तक. एंड ऑल्सो आई बी ऑन अ ग्रेट माइंडसेट. सॉरी फॉर दैट. ओके, आई हैव. And besides that, we're going to work on a lot of insecurities. Yes, I do have insecurities. A lot of us have. I don't know if you guys remember, एक time था जब I used to make videos अपनी खुद की voice में, comedy videos. And उस time पे I got a lot of comments saying my voice is not good for comedy content. I don't think so they meant it in a bad way, but वो बातें मेरे दिमाग में रह गई. And उसके बाद every time I try to make video अपनी voice में, those comment kind of stayed with me. It's not that my voice is not good for comedy content or my voice is not good. It's just that मुझे उतना confidence नहीं है ऐसी videos बनाने में, अपनी voice में videos बनाने में. So that is something I really want to work on in 2026. That I want to make videos in my own voice. You know, like ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी वॉइस सूटेबल नहीं है. इट्स जस्ट दैट मे बी मेरे में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है या मैं अभी उस लेवल पे नहीं हूँ. थिंग्स लाइक दैट. आई विश दे कुड हैव यूज्ड बेटर वर्ड्स सेइंग ओह यू नीड मोर प्रैक्टिस इंस्टेड ऑफ कमिंग अप टू मी एंड बी लाइक तेरी आवाज अच्छी नहीं है, तेरी आवाज कॉमेडी वीडियोस के लिए नहीं बनी है, तेरी आवाज इन वीडियोस के लिए नहीं बनी है. Those things kind of stayed with me because the entire idea of making content creation sorry, the entire idea of content creation came because I had a lot of insecurities and I wanted to get out of them. It's a sad story that I will share some other day. I had a lot of insecurities. ठीक है, बहुत सारी insecurities थी मेरे अंदर जिसकी वजह से I decided to start making videos because I used to be very fat at that time, like literally very fat to a point where people said a lot of things and I was like, oh, you know, there's an entire image कि लड़कियां ऐसी दिखनी चाहिए. So if you don't fit in that category, a lot of people say a lot of things. That kind of stayed with me. Because of which I was so insecure of a lot of things. जैसे अपनी फोटोज खींचने में, अपनी वीडियोस बनाने में, बाहर जाने में, अच्छे से ड्रेसअप होने में. I was so insecure because a lot of people said that I was not good enough. I was not looking good because I was fat. But ever since growing up, I thought I had this mentality like, you know, fat me, slim me, it's me at the end of the day. क्या फर्क पड़ता है? But ऐसा नहीं है. Your outer appearance matters. ये मेरे को बहुत ज्यादा लोगों ने, you know, एहसास दिलाया would be the right word. So yeah, it's another story for another day. हम फिर कभी इस बारे में बात करेंगे because अभी मेरा थोड़ा से ज्ञान देने का मन नहीं हो रहा. फिर कभी पक्का. बट हाँ, सो जब मुझे वो बातें बोली ना कि तो योर वॉइस इज नॉट गुड, दैट काइंड ऑफ स्टेड विद मी एंड बिकॉज ऑफ विच आई वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट when making videos in my own voice. जिस वजह से मैं ऐसी वीडियोस बनाने में भी बहुत ज़्यादा शर्माती हूँ. आई वोंट से शर्माना वुड बी द राइट वर्ड, बट लाइक एक झिझक होती है ना कि हाँ मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा खोलने में काइंड ऑफ. सो या ओके. So yeah, that is what my 2027. And also there is so much I want to do. Okay, I will start my podcast. मैंने कब से प्लान बनाया हुआ that I will start my own podcast, but हमेशा रह जाता था because of my insecurities. There is so much I want to share. I feel like ever since I'm making content, किसी को exactly नहीं पता मैं कैसी हूँ. You just have a brief idea of what I am, but how I am, you have no idea. So that is something I want to do. Also, there's a lot. I want to make travel videos, cooking videos, and the list goes on and on and on and on. So yeah, this is the plan for 2026. A lot of me, a hell lot of me. मेरी बहुत सारी videos, मेरा बहुत सारा बकवास, मेरा बहुत सारा ज्ञान. Yes, मैं ज्ञान भी दे सकती हूँ. Apparently, I'm a very good ज्ञान.
So yeah, that's the plan for 2026. A lot of me, a lot of videos, a lot of content, a lot of I don't know. And if you have any suggestion, please tell me, because I need them very, very, very badly. And if we are able to make it, this is going to be epic. Because if you think you can do it, then you can do it. तब तक के लिए ओके बाय. एंड मैं दोबारा गायब नहीं होने वाली हूँ. Also, make sure you follow me on Instagram and Snapchat if you like, and also Facebook. Okay, bye.